ये सुप्रीमो का 8वां साल है और इस बार हम लोग फुटबॉल और क्रिकेट दोनों साथ साथ कर रहे हैं। हमारे युवा नेता शिवसेना के नेता आदित्य जी ठाकरे मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है जैसे क्रिकेट में 8 साल हम लोग ने किया है ऐसा ही भव्य दिव्य एक फुटबॉल भी टूर्नामेंट होना चाहिए। इसीलिए हम लोग सुप्रीमो ट्रॉफी फुटबॉल की तरफ से यहाँ पर पेश करते हैं। असं मराठीमध्ये पहिल्यांदा क्रिकेट आणि फुटबॉल एकत्र याच्यामध्ये तुम्हाला तर काय सांगाल याच्यासाठी? मोठ्या प्रमाणात फुटबॉल प्रथमच होते, परंतु 8 वर्षामध्ये 2 वेळा अजून फुटबॉल एकदा झाले होते, त्याचं ऑर्गनाईज आपण केलं होतं. पण यावेळेस मुंबई क्रिकेट फुटबॉल मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष आदित्यजी ठाकरे आहेत. त्यांचं असं म्हणणं होतं की ज्या पद्धतीने आपण 8 वर्ष क्रिकेटचे सामने भरवले, त्यात मोठ्या प्रमाणात आपण फुटबॉलचे सामने भरवले पाहिजे. आणि योगायोग म्हणजे 27 तारीखला बार्सिलोना आणि युजेन दुसरी एक टीम आपलं डी वाय पाटीलला खेळण्यासाठी येत आहे. आणि मला त्यांना हे संपूर्ण सुप्रीमोचं भव्य दिवस स्वरूप दाखवायचं होतं आणि एक यूट्यूबच्या माध्यमातून किंवा फिल्मच्या माध्यमातून आम्ही ही त्यांना सुप्रीमोची भव्यता दाखवणार आहोत. म्हणून आम्ही आयोजन हे त्यावेळेसच केलेलं आहे, जेणेकरून मुंबईमध्ये नव्हे तर संपूर्ण भारतात फुटबॉलचा प्रसारसुद्धा होणं आवश्यक आहे. रेडी? तो पहली बार क्रिकेट और फुटबॉल की लीग शुरू होने जा रही है, इसका क्या कहेंगे आप? ये पहली बार नहीं, तीसरा टाइम है, लेकिन बड़े पैमाने पे फुटबॉल का टूर्नामेंट सुप्रीमो में ये पहला टाइम हो रहा है. हमारा मुंबई के डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य जी ठाकरे जी, इनका कहना था कि जिस तरह से हम लोग क्रिकेट के बड़े पैमाने पे टूर्नामेंट कर रहे हैं, वैसा ही मुंबई में फुटबॉल का टूर्नामेंट होना चाहिए सुप्रीमो के माध्यम से. आज पूरा मुंबई में बड़े बड़े स्कूल्स या बीएमसी के स्कूल भी फुटबॉल खेलने लगे. उनको एक दिखाने के लिए कि वो इतने बड़े फुटबॉल में लोग शामिल होते हैं और टीम को कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं. इसीलिए हम लोग सुप्रीमो ट्रॉफी में फुटबॉल का आयोजन किया है. क्रिकेट और फुटबॉल को अब साथ में और ऐसे कौन से खेल हैं जिनको और भी प्रायोरिटी दी जाएगी? आजकल कबड्डी भी है, बैडमिंटन है. ये सब सारे खेल हमने जिस टाइम फर्स्ट टाइम सुप्रीमो किया था उस टाइम कुश्ती से लेके बॉडी बिल्डिंग, कैरम, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट, ऐसे सारे खेल का आयोजन किया था. मराठी में चाहिए? इस लीग इतने बड़े लेवल पे ये लीग है, तो इसमें प्लेयर्स बाहर से भी आएंगे, इसमें अर्जेंटीना से भी आएंगे. ये मुंबई का टूर्नामेंट जो है, अभी जो हम लोग सुप्रीमो खिला रहे हैं, वो सिर्फ मुंबई के प्लेयर खेल सकते हैं. जो हम लोग ने 8 जोन किया है मुंबई के, वो 8 जोन के प्लेयर वहाँ पर खेल सकते, बाहर के प्लेयर नहीं खेल सकते. सर 2019 से बहुत प्लेयर्स होंगे टीम में और ये बीबीसी की एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है? सॉरी, 2019 से टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो रोटेट होते रहेंगे, तो ये स्ट्रैटेजी एक्सपेरिमेंट में आपका क्या ख्याल है बीबीसी का? देखिए, मुंबई के ये जोन का टूर्नामेंट बनाना, इसका मतलब है पूरा बच्चों लोगों का टैलेंट बाहर निकालना. आज अगर कुलाबा से लेके कल्याण तक अगर हम लोग 8 टीम जोन बनाया है, तो वहाँ के सब बच्चे लोग जो खेलने वाले, उनका हम लोग ने ट्रायल भी लिया है और सिलेक्शन कमेटी वहाँ पर बैठी थी और सिलेक्शन करके टीम बनाई. इसका मतलब ये है लोगों को, बच्चे लोगों को आगे लाना और उनका टैलेंट जो है वो देख के उनका टीम बनाना. आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में ये ऐसा ही चलता रहेगा टूर्नामेंट. मुझे तो कोशिश रहेगी सुप्रीमो की तरफ से कि हर साल ये फुटबॉल का टूर्नामेंट करके बच्चे लोगों को आगे लाना और 4-5 साल में उनका एक अच्छा टीम बना के मुंबई की पेश करना. सर और इस साल इंडियन टीम बहुत ज़्यादा ओडीआई खेलेगी और बहुत ज़्यादा मैचेस खेलेगी, तो आपका इस पर क्या ख्याल है? क्रिकेट के बारे में, वनडे क्रिकेट के बारे में मैं तो बोलता हूँ वनडे खेलना चाहिए. वो फास्ट क्रिकेट है, उससे भी फास्ट क्रिकेट है T20. लेकिन मैं तो 5 दिन के जो टेस्ट क्रिकेट होता है उसको मैं लाइक करूँगा. उसमें बच्चे लोग और खेलने वालों को अपना क्रिकेट या अपना खेल दिखाने का उनका मौका मिलता है. इसका मतलब ये नहीं कि T20 नहीं खेलना चाहिए या वनडे मैच नहीं खेलना चाहिए. वनडे भी खेलना चाहिए, लेकिन अपना मेन जो क्रिकेट है 5 दिन का, उसको भूलना नहीं चाहिए. थैंक यू.
ठीक है. Sir, look here, sir. Yes, sir. Sir, look here. Let's look here. Running. Rolling, sir. You want me to talk about Supremo Cheshire? Yes, sir. So please tell us your Well, company updating today. I'm very happy that I think this is the 8th year of this tournament. I think it's a very good tournament. I think it is an excellent platform for many cricketers, not only from Mumbai, but also for our station players. And it's a fantastic tournament because this is watched by a lot of people. It is the biggest tournament, I think tennis ball cricket, I would say. And I enjoy coming here every year. And this is the 8th year. I wish them all the best because Sanjay Potnis has been working hard over the years and I think he's put up a fantastic show. Okay, thank you. How are you? Good, how are you? Good to see you. We just want to do some visuals here, Aditya. Sir, with wait, the sir. ball. Do it later. The light Sir, wait, will wait, open and so we were Sir, waiting for a while. actually, I just not. We'll come back. Okay, done. सर एक टास्क. मला माहित नाही ब्रँड अँबॅसेडर आहे की नाही पण नक्कीच MDFA प्रेसिडेंट म्हणून मी खरोखर संजयजींचं अभिनंदन करीन कारण क्रिकेटचा तर सामना भरवत असतातच पण आधीपासून मला आठवतं 2011 मध्ये वगैरे फुटबॉलचं केलेलं त्यांनी आणि पुन्हा एकदा एवढ्या मोठ्या स्केलवर सुप्रीमो कप आपण आणतोय खरोखर अभिनंदन. So what are your encouraging words for the players and it's such a large Super League? I don't think I'm a great player to encourage them to play well, but I think all of them should play to win. That's the most important thing. Any questions, anybody? सुप्रीमो कप बरं सर मराठीमध्ये म्हणता होता आपण. बोललो ना मी पहिलं प्रश्न काय प्रोजेक्ट फायनल प्रोजेक्ट नाही मी आज ह्याच्यावर बोलणार आहे मला वाटतं उद्या उद्धव साहेब चाललेच आहेत नाण्याला If you could just repeat the same thing in Hindi, I think that will be. काय बोलू सेल्फ गोल नहीं करायचं पण नहीं मैं खास अभिनंदन करना चाहता हूँ संजय पोतनीस जी का क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा सुप्रीमो कप फुटबॉल के लिए रखा है क्रिकेट के लिए तो रखते ही है और सभी जो स्पेक्टेटर्स है ऑडियंस है टीम्स है सभी को मैं शुभेच्छा देता हूँ. Chaliye, please come on the platform. Thank you. Aye. And a big round of applause for Mr. Ratan Tata, our guest of honor, here at the Supremo Trophy, where we will be unveiling the trophy as well as launch of t-shirts. Mr. Ratan Tata, of course, a wonderful personality, an industrialist of topmost class, and a wonderful human being, gracing the occasion there at the NCA Recreation Center for this inauguration ceremony of the Supremo Trophy launch. I request Mr. Potnisar to present a memento to Mr. Ratan Tata as a token of appreciation and love from the organizers of the Supremo Trophy and the Supremo Foundation. And we have a big round of applause against Mr. Ratan Tata.
Yes, Mr. Aditya Thackeray and Mr. Dilip Venksatkar are joining in, and that's where we welcome in Mr. Ratan Tata. Also now, since Mr. Aditya Thackeray and Dilip Venksatkar are here on stage, may I request the sequence that we got. So Mr. Aditya Thackeray, the NDFA President, brand ambassador of the league, and of course Mr. Dilip Venksatkar, the former India captain, former chairman of Sri Friends, former India captain who has played 116 test matches for India, 17 centuries, and that's the former India captain, Mr. Dilip Venksatkar, former chairman of selectors. And now may I request Mr. Sanjay Kotis to felicitate Mr. Aditya Thackeray, NDFA President, the brand ambassador of the league, and the Yuva Sena President. What a wonderful guest list that you have. Mr. Ratan Tata, Mr. Dilip Venksatkar, and Mr. Aditya Thackeray. I will request the gentleman to say a few words, but first request Mr. Ratan Tata to say a few words. Good evening, friends. I won't bore you with a long speech, other than to say it's a great privilege and pleasure for me to be here this evening. The Supremo Foundation is a foundation all of us should be proud of. It is giving an opportunity to young people to excel in sports and on an equal basis based on their skills, not on how rich they are or how well known they are. So I congratulate the foundation for what it is doing, and I hope it receives the support of all of us to make it bigger and better and far more far-reaching than it has been today. But it's a great thank you for everything you have done. Thank you very much. I'm honored to share that, guys, with my old boss Ratan Tata. He's been a legend of Indian corporate world, and his contribution to the country is unparalleled. Aditya ji and Sanjay Kotis, I think Sanjay has done a fantastic job. And this is the 8th year of this competition, which has given an excellent platform for many cricketers, not only from Mumbai, but from all over India. I would say that this is an IPL of tennis ball cricket. And a lot of credit goes to Sanjay, Anil Parab ji, and all those who are working behind the scene to make this tournament a great success. Aditya has been very fond of football. Of course, he likes cricket as well, but very fond of football. And I think this year, 8 teams also will be participating in football. I think there is Supremo, Cheshire, right? And of course, football is fast catching up in India. And this tournament has got 8 teams. Now we have ISL also, which is doing well. And with Aditya at the head of affairs, we'll see good days for football. I would like to wish him all the success because Aditya is young, energetic, a very competent young man. I wish him all the success. Hope he comes in cricket because we need some good cricketers now, or people who are good administrators. After the Supreme Court judgment, that 9 years you have the maximum term in cricket. So we are all out and we look forward to young guys who are competent administrators like Aditya. The thing is, we need infrastructure in Maharashtra. And today, I read an interview of Rahul Aware, who won gold medal in Commonwealth, and his fantastic feat.
And thing is, what he said is that there is no infrastructure in Maharashtra other than cricket. And for all the nationals, he has to go to Haryana to play kushti. I think to wrestling. I think those who play kabaddi, they know headquarters is Punjab. While Maharashtra has got fantastic players and a lot of tournaments in Maharashtra, in Mumbai, I would say. So the infrastructure has to improve. There are a lot of open spaces in Maharashtra. Because I watch a lot of matches in small villages in Maharashtra. There is a lot of talent, especially in Adivasi areas, and they are not tapped, and they are not given the platform. So what is really needed is to give platform to young cricketers or young sports persons. There are a lot of them, there is a lot of talent in India, but the infrastructure is lacking. I hope that the government would do something for this and create infrastructure, because open spaces I think can be preserved, can be developed. Open spaces are very, very important. They are very far. There are very few in Mumbai. And they should be developed, and they should be given to young sports persons to hone their skills, to hone their talent. Once again, I would like to congratulate my friend Sanjay Potnis, and Arvind is here as well, Anil Parab, for doing a fantastic job. This is the 8th year of this tournament. I wish all the players all the best, and these guys all the very best. And I hope it will be a great success like the last 7 years. Thank you very much, and God bless you. Centuries at Lords. He's also called as the Lord of Lords. What great personalities that we've got here. Can you have a big round of applause for some wonderful words that Mr. Dilip Laxmi just spoke about the need for infrastructure, the need for growth, and the support. Because it's not very apt to speak after the legends have spoken. पण संजयजी, तुम्ही मला आज इथे इन्व्हाइट केलं, खरोखर आनंद होतोय, कारण गेले कितीतरी वर्ष मी बघतोय, मला वाटतं 2010 पासून 2009-2010 पासून सुप्रीम कपला मी नेहमी येत असतो. आणि मग प्रत्येक वेळी क्रिकेट तर बघत असतो. ह्यावेळी आपल्याला जी आयडिया सुचली, मला वाटतं 2011 मध्ये आपण केलेलं सुप्रीम ट्रॉफी फुटबॉलसाठी. हे खरोखरच दोन आपण गेम बघताय की खूप पुढे येतात. हे तुम्ही जर सुप्रीम कोर्टला प्रत्येक वर्षी येत असाल तर बघत असाल की हे कसं तुम्ही घडवून आणता, हा खूप मोठा प्रश्न आहे. कारण तुम्ही आत गेलं की जणू की तुम्ही वानखेडेमध्ये चाललं असं वाटतं. पूर्ण स्टेडियमची ॲटमॉस्फिअर, लाईट्स असतात, कॉमेंट्री तशी असते. आणि म्हणून मी खरोखर अभिनंदन करीन सुप्रीमो ट्रॉफीचे सचिन आणि सेहवाग, आमचे दोन जे रिटायर नाही झालेत, अनिल परबजी आणि संजय पोतनीसजी. खरोखर ते 6 मारत असतात आणि ओपनिंग बॅटिंगच अशी करतात की इतर ठिकाणी जिथे जिथे शाखेच्या मॅचेस होतात त्यांना पण एक स्फूर्ती मिळते की अरे आपली जी चषक आहे, आपला जो चषक आहे तो सुप्रीमो ट्रॉफी सारखा व्हावा. दिलीप दादा, तुम्ही मला आता तेच सांगत होता की माझ्याकडे फुटबॉल वरती येतं, पण खरोखर मी आय एम द ओनली फेस. आय एम नथिंग मोर दॅन अ फेस. द रियल टीम that is bringing ahead football is the whole team of MDFA that's sitting there. Everyone, Shobnaji, Udayji, Sagarji, all of them. They are working hard day and night to ensure that football is coming ahead. Tata Sir, we have achieved something that very few city associations achieve in a very short span of time because of the help of all these people and Dr. Vijay Patil. It is said that Mumbai, Wankhede Stadium and the Eden Gardens in Kolkata for cricket, which are the two most famous venues for cricket in India. Till date, for football, it was Kolkata. But thankfully, due to the efforts and the good wishes of everyone who have helped us with the ground, we've achieved a status that the Indian football national coach, Stephen Constantine, loves the ground as a lucky venue, and after playing or training at Mumbai Football Arena, the Indian team hasn't lost a single game in the last 18 years. Football is a regular venue. एक प्रयत्न आहे की जेवढं कोलकाता फेमस आहे फुटबॉलसाठी, होम ऑफ इंडियन फुटबॉल आपण मुंबई करण्याचा प्रयत्न करतो. अर्थात दिलीप काका, आपण जे बोललात ते खूप महत्त्वाचं आहे की इंडियामध्ये आपण टॅलेंट आहे, गावाकडे टॅलेंट आहे, सगळीकडे एक फायर इन द बेली आहे खेळायची, जिंकायची. पण दोन गोष्टी आपल्यात कमी आहेत, ॲक्सेस आणि ऑपॉर्च्युनिटीज पुरवणं, आणि दुसरं म्हणजे सपोर्ट फ्रॉम विच एव्हर असोसिएशन और विच एव्हर गव्हर्नमेंट पॉसिबल. पण at MDFA आम्ही प्रयत्न करतोय की अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सला इवन इफ इंडियन टीम ट्रेन्स देअर,
At the same time, we gave it to the local most teams and the lowest divisions free of cost to have the best player experience and train better there. That is our endeavor. That is what we are trying to achieve. परत शाळेत तिथे बेबी लीग सुरू केले. वय वर्ष 4 पासून फुटबॉल खेळायला सुरू करतात. तर जसं क्रिकेट नॅशनल गेम आहे, मला वाटतं की मी ऑर्नामेंट सर्कलच्या आसपास जर गेलं तर संडेला गल्ली क्रिकेट चालू असते. आणि मग आम्ही तो फुटबॉल म्हणून पण इंट्रोड्यूस करण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि खरोखर जसं हे टेनिस बॉल क्रिकेट जसं IPL झालं सुप्रीमोचं, तसंच मला खात्री आहे की सुप्रीमो फुटबॉल ट्रॉफी ही देशातली ISL किंवा त्याच्याही पुढे जाऊ शकेल किंवा त्या ISLला टॅलेंट देईल आपल्या पण प्रयत्न केले. मला वाटतं आज जास्ती वेळ घेणार नाही. मला माहिती आहे की सगळ्यांना ट्रॉफी बघायची आहे आणि जे प्लेयर्स आहेत ते बघायचे आहेत. खरोखर पुन्हा एकदा अनिल परबजी आणि संजय कोकणीजींचे धन्यवाद मानतो, आभार मानतो आणि पूर्ण टीम सुप्रीमोची तुम्हाला सगळ्यांना माझ्या शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. फुटबॉल, सुप्रीमो चषक, क्रिकेट या दोन्ही ट्रॉफीजचं आपण अनावरण करूया. जोरदार टाळ्या आपण वाजवूया. जोरदार टाळ्या वाजवूया आपण या सुप्रीमो चषकांसाठी. सुप्रीमो चषक फुटबॉल, सुप्रीमो चषक क्रिकेट आणि हे दोन अप्रतिम असे चषक, अप्रतिम अशा ट्रॉफीज आपण फुटबॉलचं एक चषक, एक क्रिकेटचं चषक आणि दोन्ही अशा या ऑर्गनायझर्स ॲडव्होकेट अनिल परब आणि मिस्टर संजय कोकणस. Sir, in the center, everyone. That's the unveiling of. I request the auditors to present the dignitaries with the T-shirts and launch the grand unveiling of the trophy. What would you like to say? I have nothing to say. I came here only to recognize the good work that's being done by the Supremo Foundation. That's why I'm here. And I wish it great success. सर, आपसे जानना चाहेंगे जो बड़ी बड़ी हस्ती मौजूद है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इसका देश ने अभिमान रखना चाहिए. देशवासियों ने जिसका अभिमान रखते हैं पूरे देश के, ऐसे रतन जी टाटा हमारे साथ में है. ये हमारे भाग्य की दिन है कि ऐसे छोटे से प्रोग्राम में उन्होंने यहाँ पर आके हमें सम्मानित किया और सुप्रीमो को इतना बड़ा कर दिया देश में और पूरा देश के बाहर भी. रतन जी टाटा हमारे सुप्रीमो को हाजिर थे. ये जब न्यूज़ जाएगी तभी सुप्रीमो की ये जो 8वें साल की हमारे गिनती है, मुझे लगता है सबसे बड़ा हमारा काम है.